Good evening to everyone. Welcome back to our Gaussian tutorial. देखो अबे आज स्टार्ट करिवा हैमिल्टोनियन लो इक्वेशन आउ लाग्रांजियन टू हैमिल्टोनियन कन्वर्सन. ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर पार्टिकल इफ वी हैव हैमिल्टोनियन. ओके, जदि हम पाखरे हैमिल्टोनियन थिबो हमें केमिति इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेशन करि परिबा. And आमे केमिति Lagrangian लो most important topic is how we easily convert Lagrangian to Hamiltonian and vice versa. Okay, so let's start. First आमे किछि Lagrangian जानिया पे पड़िबो जोटा कि मन रखिया पे पड़िबो. Basically आमे कि मन रखिया पे पड़िबो. Okay, so write down some constructed Lagrangian. देखो आपको मन रखिबो. ओके, तो फर्स्ट Lagrangian कोथि पई ना Lagrangian of free particle Lagrangian of free particle कौन हबो. देखो फ्री रिलेटिविस्टिक पार्टिकल Lagrangian of free relativistic particle means कौन ना जेतो बेले relativistic means कौन जेतो बेले velocity nearly comparable to velocity of light. ओके, v nearly comparable to c जेतला में कंपैरिजन करि परिबा v आउ c मध्य रे सेतले कहया कि पार्टिकल लो हाई स्पीड बा इट इज ए रिलेटिविस्टिक स्पीड. ओके, तो सही क्षेत्र रे काइनेटिक एनर्जी केते हबो. फ्री पार्टिकल मींस पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी कौन हबो माइनस m नॉट c स्क्वायर. m नॉट हला रेस्ट मास एनर्जी 1 माइनस v स्क्वायर अपन c स्क्वायर अंडर रूट. ओके, तो v स्क्वायर हला कोन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. ओके, m नॉट हला रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल. ओके, सेकंड हला जेतु पोटेंशियल एठी कोन फ्री पार्टिकल तो पोटेंशियल जीरो. ओके, Lagrangian of relativistic particle in potential v एटी फ्री थिला एटी v पोटेंशियल जदी मूव करे देन कोन हबो देन Lagrangian इज इक्वल टू माइनस m नॉट c स्क्वायर 1 माइनस v स्क्वायर अपन c स्क्वायर. एटा मन रखिबो काइनेटिक एनर्जी. ओके, रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी. ओके, l हेडा हला t माइनस v जेतु पोटेंशियल एटी v तो v. तो थर्ड क्वेश्चन हला बा थर्ड जो Lagrangian तमे मन रखिबो Lagrangian of non-relativistic particle यार चार्ज q and mass m moving in electromagnetic potential by electromagnetic field. ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल कौन स्केलर पोटेंशियल फाई एंड मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल ए. तो एई जोडी इलेक्ट्रिक फील्ड आउ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट थिबो सही क्षेत्र रे जदी गुटे नॉन रिलेटिविस्टिक मींस तार वेलोसिटी नॉट हाई. ओके, तो जार चार्ज हला q एंड मास m देन तार Lagrangian कौन हबो ना तार Lagrangian हला काइनेटिक एनर्जी हला हाफ mv स्क्वायर नॉन रिलेटिविस्टिक अछि. ओके, पोटेंशियल एनर्जी कौन हबो पोटेंशियल एनर्जी हला q phi minus q a dot b. a dot b v हला वेलोसिटी. ओके, v हला वेलोसिटी. तो एठी v हला पोटेंशियल हला q phi माइनस q होल इनटू a dot v एला पोटेंशियल. ओके, तो टोटल Lagrangian को हम लिख परिबा हाफ m v स्क्वायर माइनस q phi
प्लस क्यू ए वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर ओके एटा हला लाग्रांजियन ऑफ ए नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल मूविंग इन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल बा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नेक्स्ट लाग्रांजियन we have to remember relativistic particle जार चार्ज q and mass m moving in phi and a means electromagnetic potential okay तो बेसिकली सेम जिनस हम जस्ट काइनेटिक लाग्रांजियन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी जगह कौन पुट करबा m नॉट c स्क्वायर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अंडर रूट ओके देन माइनस ऑफ तमरा v हला केते q phi माइनस q a vector dot b vector okay this is our potential energy okay तो मु रिलेटिविस्टिक जेतले पढेबी सेतले केमती काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एतिकी हुए सेटा मु कहिबी ओके तार एक्सप्रेशन हमें केमती काइनेटिक एनर्जी केमती हुए टोटल एनर्जी रु माइनस रेस्ट मास एनर्जी को माइनस कर देले केमती टर्म आसीबो मु सेटा रिलेटिविस्टिक पढेला बेले कहिबी जस्ट एबे तमे एटा मन रख कि गोटे रिलेटिविस्टिक पार्टिकल पई काइनेटिक एनर्जी एतिकी आउ जदी गोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल फील्ड रे बा पोटेंशियल मूव करियो गोटे चार्ज पार्टिकल देन तार पोटेंशियल एनर्जी हला एतिकी ओके फाइन ओके तो एबे हमें पढ़िबा कन्वर्सन ऑफ जोटे कि बहुत इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट सबु एग्जाम रे पड़े कन्वर्सन फ्रॉम लाग्रांजियन टू हैमिल्टोनियन लाग्रांजियन टू हैमिल्टोनियन okay conversion from Lagrangian to Hamiltonian okay तो फर्स्ट हमें कौन करबा L is given यदि फर्स्ट हमको L दिया हैतिबो तो हमें ताको थ्रू H कैलकुलेशन करबा ओके थ्योरेटिकल प्रोसेस में कहूची ओके तो यदि L दिया हैतिबो तले हमें कौन करबा then we use हमें जानछंती कैनोनिकल मोमेंटम इज इक्वल टू यदि हमें लाग्रांजियन को पार्शियल डेरिवेटिव कहबा जनरलाइज कोऑर्डिनेट बा जनरल वेलोसिटी बा qi डॉट सहित यदि हमें कैलकुलेशन डेरिवेटिव करबा देन हमें जनरलाइज बा कैनोनिकल मोमेंटम पाइबा ओके बा कंजुगेट मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू qi से कोऑर्डिनेट रो कंजुगेट मोमेंटम पाइबा ठीक अछि तो जेतबेले हमें पाई गले देन हमें एटा लिख साइला परे हमें लिखिबा फाइंड qi डॉट बाहर करबा इन टर्म्स ऑफ qi डॉट बाहर करबा इन टर्म्स ऑफ p बा qi डॉट फ्रॉम दिस qi डॉट को हमें कैलकुलेशन करबा फाइंड qi डॉट फ्रॉम दिस ओके ए थ्रू हमें कौन बाहर करबा qi डॉट ओके सेकंड रे देन हमें यूज करबा हैमिल्टोनियन कोन हैमिल्टोनियन लाग्रांजियन भीतर रिलेशन समेशन i qi pi qi डॉट बा q डॉट pi ओके हमें लिख परबा pi qi dot minus l okay which is legendary transformation okay then हमें कौन करबा आरो वैल्यू पुट करबा ओके हमको हैमिल्टोनियन कोथरे दरकार pi qi आउ t तो qi डॉट को हमें रिमूव करबा qi डॉट को कोई इक्वेशन रिमूव करबा एठो हमें qi डॉट पाई छथि एठो हमें रिमूव कर देबा ओके तो थर्ड पॉइंट रे हमें लिखिबा कि पुट द value of qi dot in terms of pi okay so that we get h is a function of qi pi t बेसिकली हमें लाग्रांजियन लू कौन ओमिट करले ना qi डॉट को इन टर्म्स ऑफ p रे ओमिट कर देले ओके तो हमरा हैमिल्टोनियन हमें पाई गले ओके रिक्वायर्ड हैमिल्टोनियन पाई गले ओके तो एबे हमें ए सब जिंस करबा पूर्वरु हमें गोटे शॉर्ट ट्रिक देखिबा केमती क्वेश्चन देखु देखु हमें लाग्रांजियन को हैमिल्टोनियन बा हैमिल्टोनियन लु लाग्रांजियन को कन्वर्ट करि परिबा ओके
ऑब्जर्वेशनल मेथड एटा ऑब्जर्व करके प्रॉब्लम रु ऑब्जर्व करके मेथड को दिया है ओके क्विक कैलकुलेशन ऑब्जर्वेशन मेथड फॉर क्विक कैलकुलेशन ओके एग्जाम रे बस के कैलकुलेशन करले ऑब्वियसली लेट होबो तो हमें क्विक कैलकुलेशन करबा ओके एपटे मु लाग्रांजियन लिखछि लाग्रांजियन एपटे हमें लिखबा हैमिल्टोनियन ओके देखो फर्स्ट यदि अच्छी हाफ f1 फंक्शन है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट आउट टाइम नॉट वेलोसिटी ओके qi डॉट स्क्वायर एभला फॉर्म रे जदि लाग्रांजियन अच्छी हाफ f1 is a function of only qi and t and velocity square means qi dot square means half mv square ए फॉर्मेट रे अच्छी m जगह रे f1 अच्छी ओके f1 is a function of only q1 and t qi and t okay not velocity then हमें यदि velocity हबो ताले हमें कन्वर्जन अप्लाई करि परिबा नाही यदि ए गुडा हला देन हमें हैमिल्टोनियन को केमति लिखिबा h pi square upon 2m एटी m जगह कोन अछि 2m m जगह ठी f अछि ओके बहुत इजी ऑब्जर्व करो प्रॉब्लम कले जानि परिबो ओके मुझे लिखुची f1 इज ए फंक्शन ऑफ बाकी केस रे मु लिखिबिनी ओके जानि परिबो कि f1 जदि लिखिली बा f2 लिखिली इज ए फंक्शन ऑफ qi एंड t ओके तो सेकंड रहला हाफ f1 qi डॉट स्क्वायर प्लस और माइनस f2 भी फंक्शन ऑफ लिखि दोची फंक्शन ऑफ qi and t देन ओटे वेलोसिटी टर्म थिबो ओके देन हमें हैमिल्टोनियन केमते लिखिबा ना एटी कोन हबो pi खाली रहइबनी एटी माइनस प्लस अछि एटी कोन हिजबो प्लस माइनस अछि एटी हिजबो माइनस प्लस उल्टा हबो ओके मार्क करिबो ए जिंसटा को मु नोट डाउन कर दोची ए जिंसटा को मार्क करिबो ओके ओके देखो पी आई एट देखो वेलोसिटी पाखरे कोन अछि वेलो qi डॉट पाखरे f2 तो एठी हबो f2 रो स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन 2m जगह कोन अछि f1 बुझला ओके प्रॉब्लम कले बुझि जेबा जस्ट राइट डाउन बर्तन लिखि दियो प्रॉब्लम कले आउटे बेटर बुझि परिबा ओके थर्ड पॉइंट हला ए भले फॉर्मेट रे देथिले हम एटा लिखिबा यदि हैमिल्टोनियन देथिबो हम ए फले सेति मु डबल एरो मार्क रेगी लिखछि ओके नेक्स्ट पॉइंट हला यदि हाफ f1 qi डॉट माइनस f2 ओके शिफ्टिंग जो कहि परिबा वेलोसिटी रे शिफ्टिंग होची स्क्वायर जदि थिबो देन हम हैमिल्टोनियन को केमते लिखिबा pi स्क्वायर अपॉन 2f1 प्लस f2 into pi ओके तो एटी f2 हला एटी माइनस रे अछि तो एटी कोन आसला प्लस रे आसला ओके अल्टरनेट प्लस रे थिले कोन आसीबो माइनस आसीबो ओके फोर्थ माइनस m नॉट c स्क्वायर 1 minus v square c square under root एटा काइनेटिक एनर्जी फॉर फ्री पार्टिकल तो फ्री पार्टिकल पई h केते हबो ना p स्क्वायर टोटल एनर्जी p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c टू द पावर 4 ओके यदि मोमेंटम देथिबो ओके एटा हम पढिचंदी रिलेटिविस्टिक रे मो रिलेटिविस्टिक पढाइले भी एटा कहबी ओके नेक्स्ट माइनस m naught c square 1 minus v square upon c square plus or minus f2v velocity अच्छी बा q dot अच्छी जेमते आगरु म कहितले देन कोन हबो ना p जगह कोन हिजबो एटी प्लस माइनस अच्छी एटी हिजबो कोन माइनस प्लस ओके f2 p square c square plus m0 square c to the power 4 under root एबे बुझौची एठी शिफ्ट हेले एठी केमति शिफ्ट होउची
एटी कोठी शिफ्ट हैला जदि वेलोसिटी टर्म रे किछि थिबो एटी मोमेंटम शिफ्ट हबो ओके एटी पॉजिटिव थिले एटी नेगेटिव हबो ओके एटा ऑब्जर्व करा है कि क्विक कैलकुलेशन पई मेथड तुमको लागुथिबो बहुत डिफिकल्ट बोली बट प्रॉब्लम कले हम इजीली ऑब्जर्व करि परिबा ओके देखो हमें प्रॉब्लम करबा क्वेश्चन नंबर 1 conversion of Lagrangian to Hamiltonian using direct method ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी Lagrangian given अच्छी हाफ qi dot square into m minus lambda upon q ओके तो एटा को मु इक्विवेलेंटली लिखुची कोटा हम अप्लाई करबा तुम बुझी परिबो हाफ f1 is a function of qi and t qi dot square ओके एटी q dot अछि एटी q dot एटी q ओके तो आकु कंपैरिजन करले आमे पाई परिबा कंपेयर जदी करबा ताले f1 q t रो वैल्यू केते ना m minus lambda by 2 ओके जदी ए फुला फॉर्म थिबो ताले मु कोन कहितली लाग्रांजियन कोन आसीबो ना सॉरी हैमिल्टोनियन कोन आसीबो ना p square upon 2f1 p square means p square upon 2f f1 जगह कोन लिखबी p square upon 2 f1 जगह कोन लिखबी m minus lambda by 2 बुझेला डायरेक्ट हमें हैमिल्टोनियन पाई गले आगे नहीं ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा सब प्रकार डाउट क्लियर हबो धीरे धीरे ओके तो हमें इजी रु जीवा ठीक अछि लाग्रांजियन देछि हाफ mv स्क्वायर माइनस vr तो हाफ mv स्क्वायर थिले हमर हैमिल्टोनियन केते हबो p स्क्वायर अपॉन 2m एटी f1 जगह कोन अछि m अछि तो 2f1 f जगह f1 जगह m अछि जेतु माइनस रे पोटेंशियल एनर्जी अछि तो प्लस रे कोन हिजबो पोटेंशियल एनर्जी हिजबो ओके ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 3 if Hamiltonian देछि Lagrangian कैलकुलेशन करिया ओके अल्फा x स्क्वायर p प्लस p स्क्वायर अपॉन 2 होल इनटू 1 प्लस 2 बीटा x प्लस हाफ ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर ओके तो एटी ऑब्वियसली जाना पड़ुची कि एटा होची कोन तमरो पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज़ इट इज ए फंक्शन ऑफ ओनली x ओके तो पोटेंशियल एनर्जी जाना पड़ुची तो हमें एटा को कन्वर्ट करबा यूजिंग डायरेक्ट मेथड ओके तो एटी कोन p स्क्वायर अपॉन 2f एटा कोन हिजबा एटा हिजबा तमरो f1 एटा हिजबो f1 तो जदी f1 हिजबो एटी p जगह कोन अछि f2 अछि ओके एटा हला f2 अल्फा x स्क्वायर हला f2 ठीक अछि तो आपको लाग्रांजियन हमें केमति लिखिबा हाफ f1 जगह कोन लिखबी f1 जगह कोन लिखबी 1 plus 2 beta x ओके 1 plus 2 beta x एटाला f1 ओके तो एटी प्लस रे ऐड हेची तो एटी शिफ्ट हबो कोन वेलोसिटी रे शिफ्ट हबो ओके तो एटी जदी x अछि एटी कोन लिखबी मु x डॉट ओके f2 एटी प्लस रे अछि तो मोर कोन लिखबी माइनस f2 जगह कोन अछि अल्फा x स्क्वायर ओके हाफ f1 x dot ro square okay this is our kinetic energy it is plus half omega square x square अछि तो minus half omega square x square okay देखो सिंपली एटा जदी लाग्रांजियन देछि तो हैमिल्टोनियन हमें केमति कन्वर्ट करबा ओके तो ए क्वेश्चन टा कोन देछि सॉरी एटा कोन हबो f1 which is a function of x and t okay this is shifting okay f2
एटा हला f2 दिस इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ x एंड t हे परिबो ठीक अछि जदी x डॉट थांदा तले डायरेक्ट मेथड हमें अप्लाई करि पारि न थांदे ओके f2 इज ए फंक्शन ऑफ जदी वेलोसिटी हे जाय थांदा ताले हमें डायरेक्ट मेथड अप्लाई करि पारि न थांदे तो मु एटी कोन कहबी p स्क्वायर अपॉन 2m कोन हबो p स्क्वायर अपॉन 2m सॉरी f1 जगह एटी कोन अछि 1 प्लस 2 बीटा x ठीक अछि ओके एटी माइनस अछि x डॉट जगह रे तो एटी आउट एक्स्ट्रा कोन पळे आसीबो p into f2 ओके p into alpha square सॉरी alpha x square ओके तो एटा माइनस पोटेंशियल एनर्जी अछि तो एटी प्लस हे जिवो हाफ ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर ऑब्जर्व करि होचे ओके देखिबा धीरे धीरे क्लियर हे जिवो ओके क्वेश्चन नंबर 4 यदि l देइछि केते हाफ mv स्क्वायर प्लस c r वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर माइनस vr ओके तो आमे हैमिल्टनियन लिखिबा देखो प्लस vr आमे जानचंदी बिकॉज़ पोटेंशियल एनर्जी t टा आको आमे कन्वर्ट करिबा ओके तो आको केमति कन्वर्ट करिबा ओके देखो एठी वेलोसिटी जगह रे कोन अछि cr डॉट अछि ओके cr वेक्टर अछि तो आमे फर्स्ट लिखिबा p अपॉन 2 f1 f जगह रे एठी m अछि ओके तो 2m लिख देली p कोन अछि शिफ्ट हबो एठी एडिशन h माने एठी शिफ्ट हबो वेलोसिटी रो कोएफिशिएंट एडिशन हेची ओके मींस वेलोसिटी अछि ऐड हेची लाग्रांजियन ले तो हैमिल्टनियन ले कोन शिफ्ट हबो ओके केते शिफ्ट हबो मोमेंटम नाडी प्लस थिले एटी माइनस v को छाड़ देले आ कोन रहला cr तो एटी लिख परिया p वेक्टर cr वेक्टर रो स्क्वायर अपॉन 2m प्लस vr ओके सिंपल क्वेश्चन नंबर 5 Lagrangian is equal to a x dot square plus b y dot square minus k xy ओके तो हैमिल्टनियन हमें लिखि परिबा प्लस k xy ओके तो एटा बे लिखिबा ओके तो एटी देखो मु एटी देखो केमति लिखछि जेहेतु हमरा फॉर्म थिला हाफ f1 qi डॉट स्क्वायर तो मु सही फॉर्मेट रे आनिया पे चेष्टा करूछि हाफ ये ला 2a ओके 2 गोटे मल्टीप्लाई कली गोटे 2 डिवाइड कर देली ओके सिमिलरली एटी 2 गोटे मल्टीप्लाई कली 2 गोटे डिवाइड कली बुझुछि तो बर्तन एबे मते कुओ दिस इज आवर f1 दिस इज आवर f2 ओके तो एबे हमें कोन लिखिबा ना px स्क्वायर अपॉन 2 into f1 जगह रे 2a पुट करिवि सिमिलरली py स्क्वायर अपॉन 2f2 जगह रे कोन पुट करिवि 2b ओके नेक्स्ट प्लस kxy तो हमरा आंसर कोन आसीला px स्क्वायर अपॉन 4a प्लस py स्क्वायर अपॉन 4b प्लस kxy बुझुछि दिस इज आवर हैमिल्टनियन देखो गोटे लाइन ले हम केमति लाग्रांजियन लो हैमिल्टनियन कन्वर्जन करि परछथि ठीक अछि ओके नेक्स्ट देखिबा हमें क्वेश्चन नंबर 6 Lagrangian is equal to half m v square plus or minus alpha vector which is a function of r and t dot v देखो एटी कोन अछि वेलोसिटी सहित एटा को हमें कोन कोंती f2 is a function of coordinate and time not velocity ओके वेलोसिटी रो कोएफिशिएंट वेलोसिटी डॉट प्रोडक्ट अछि ठीक अछि किंतु जो फंक्शन हबो जो f2 टा इज ओनली ए फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एंड टाइम सेति पय हम डायरेक्ट मेथड अप्लाई करि परिबा नहले अप्लाई करि परिबा नाही ओके माइनस पोटेंशियल तो हम जानि चंती प्लस हैमिल्टनियन ले कोन हे जिवो प्लस vr हे जिवो आकु हमें देखिबार अछि एटा को हमें देखिबार अछि ओके देखो एगोटी कोन अछि p स्क्वायर अपॉन 2m एजी f जगह m अछि ओके f1 जगह m अछि ओके तो एटी वेलोसिटी रे एडिशन हेछि प्लस और माइनस अछि तो एटी कोन हबो मोमेंटम शिफ्ट हबो केते शिफ्ट हबो ना प्लस और माइनस अछि माइनस और प्लस हबो केते शिफ्ट हबो ना अल्फा शिफ्ट हबो केते शिफ्ट हबो ना अल्फा शिफ्ट हबो स्क्वायर बुझियोछि ओके हैमिल्टनियन पाई गले क्वेश्चन नंबर 7 if
Lagrangian is equal to m naught c square 1 minus v square upon c square under root okay minus vr तो ऑब्वियसली आगे प्लस vr लिख दबा देन हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू तो ये देखो कौन लिखिबा आ बदले हम कौन लिखिबा हम कहितली डायरेक्ट ना p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c टू द पावर 4 प्लस vr ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हैमिल्टोनियन देची p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस नहीं हैमिल्टोनियन एवला देनी हैमिल्टोनियन देची p स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अंडर रूट प्लस vr लाग्रांजियन कैलकुलेशन करिया पई देची ओके तो कंपैरिजन करबा रिलेटिविस्टिक टोटल एनर्जी कोन थिला ना आको कंपेयर करबा का से तो ना p स्क्वायर प्लस m स्क्वायर अंडर रूट को कंपेयर करबा p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c टू द पावर 4 ओके तो c इज इक्वल टू 1 and m naught is equal to m एठी ए इक्वेशन बाबा ए आको पुट करछि ओके c is equal to 1 and m0 is equal to m देन हमें एटा आछि ओके तो एबे हमें जानचंदी हैमिल्टोनियन ए भला थिले लाग्रांजियन कोन आसीबो माइनस m naught 1 m naught c स्क्वायर 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर रो अंडर रूट एटी प्लस अछि लाग्रांजियन ले कोन हे जिवो पोटेंशियल माइनस हे जिवो ओके नाउ वर्तमान m naught जगह में कोन पुट करबा m पुट करिबा c जगह रे 1 पुट करिबा 1 लो स्क्वायर 1 माइनस v जगह रे कोन पुट करिबा v स्क्वायर c हला 1 ओके तो 1 माइनस v स्क्वायर माइनस vr ठीक अछि दिस इज आवर लाग्रांजियन ओके आउडा क्वेश्चन देखो लाग्रांजियन देची हाफ m q डॉट स्क्वायर माइनस लैम्बडा बाय 2 q डॉट स्क्वायर तो मते एठी को एठी f2 कोटा f1 कोटा f2 कोटा एटा हला f1 एटा हला कोन f2 तो हमें जतले हैमिल्टोनियन लिखिबा तो हमें कोन लिखिबा ना p स्क्वायर कोन हबो जेतु एठी माइनस अछि एठी प्लस रे शिफ्ट हबो केते शिफ्ट हबो f2 शिफ्ट हबो f2 केते ना लैम्बडा बाय 2 इनटू q r स्क्वायर अपॉन 2 f1 केते अछि m अछि ओके सिंपल हे गला ओके एटी q डॉट स्क्वायर अछि ओके गोटे जिंस एटी q डॉट नाही यदि q डॉट थांदा ताले दिस इज राइट ओके आ गोटे क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 10 okay if Lagrangian is equal to half m q dot square minus lambda by 2 q dot square okay तो एठी कोन हबो ना हाफ q dot square कॉमन आसी गले m minus lambda by 2 ठीक अछि q dot square okay तो half f1 is a function of q and t okay q and t q dot square okay तो फॉर्मेट रे आसीला एबे हमर हैमिल्टोनियन कोन हबो ना p स्क्वायर अपॉन 2m m बा 2f1 जगह कोन पुट करबा m माइनस लैम्बडा बाय 2 बुझियला तो सिंपल कैलकुलेशन थिला देखिबो मार्क करबो एटी q डॉट अछि या q डॉट स्क्वायर अछि q डॉट स्क्वायर थिले एटी q डॉट स्क्वायर तो कॉमन आसी जिवो ओके यदि वेलोसिटी बा q डॉट सहित जहा भी थिबो सेटा को हम f2 नउछंदी ठीक अछि वेरी गुड वर्तमान नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 11 लाग्रांजियन देछि कते हाफ m x डॉट स्क्वायर minus a is a function of x and t x dot minus vx देखो x dot मीन वेलोसिटी सहित अछि ओके तो फास्ट हैमिल्टोनियन लिखिबा पूर्वरु आमे लिखि दबा माइनस अछि पोटेंशियल तो पोटेंशियल एटी प्लस हे जिवो एटी देखो
वेलोसिटी सहित अच्छी तो मोमेंटम कौन हम px बा x डायरेक्शन ले मोमेंटम कौन हम शिफ्ट हम केते शिफ्ट हम ना प्लस से प्लस एटी माइनस अच्छी एटी पॉसिबल प्लस ओके तो वेलोसिटी कंपोनेंट कौन अच्छी a अच्छी बा एटा हमर f2 एटा हमर f2 ओके एटी a आसला स्क्वायर अपॉन 2m सिंपल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 लाग्रांजियन केते दीची हाफ m v square minus q phi this is most important plus q c a dot b b हला velocity ओके तो आकु मु रीअरेंज करी लिखछि लाग्रांजियन इज इक्वल टू हाफ m v square velocity ओके प्लस q by c a dot b ओके माइनस q phi ठीक अछि तो वेलोसिटी सहित अच्छी माने एटा अलगा ट्रांसफॉर्मेशन हबो ओके एटा q phi माइनस q phi अछि माने प्लस q phi हे जिवो आकु हमें लिखिबा केमती ना देखो देखो एटी लिखिबा हमें p स्क्वायर अपॉन 2m आगे नहीं p स्क्वायर अपॉन 2m ओके तो एठी देखो वेलोसिटी रो एटा हला हमरो f2 एटा हला f2 केते ना ये प्लस अछि माने एटी केते शिफ्ट हबो माइनस रे शिफ्ट हबो केते शिफ्ट हबो f2 अमाउंट f2 केते अछि q by c a स्क्वायर ओके तो एबे बुझियला हैमिल्टनियन को हम केमति लिख पाछंती ओके तो बेसिकली एटा हला मु बहुत प्रॉब्लम करिवार कारण होची लाग्रांजियन और हैमिल्टनियन कन्वर्जन एवरी एग्जाम रे पड़े आ बहुत इंपोर्टेंट ओके तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड रे तमे आरो सॉल्यूशन कैलकुलेशन करि परिबो ठीक अछि ओके तो एबे हम देखिबा आ गुटे टाइप रो क्वेश्चन पचारु छी जेमती ना डायनामिक्स ऑफ पार्टिकल ओके राइट डाउन if question related to types of dynamics first write equation of motion then use following points ओके कौन कौन फॉलोइंग पॉइंट्स यूज करबा ना देखो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेशन करबा ओके लाग्रांजियन जे देथिबो लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेशन करबा बट से जे इक्वेशन लो बा जो इक्वेशन ऑफ मोशन आसीबो सेठू हमें जानिबा कि पार्टिकुलर डायनामिक्स मींस मोशन केमिति को टाइप रो मोशन करूची ओके केमि जानिबा ना ए सब पॉइंट को नोट डाउन करो ओके जदी क्यू आई डबल डॉट मींस जनरलाइज कोऑर्डिनेट रो ऑसिलेशन मींस x डबल डॉट बा y डबल डॉट बा थीटा डबल डॉट ओके क्यू आई डबल डॉट जदी जीरो हुए मींस ऑसिलेशन इज इक्वल टू जीरो ऑसिलेशन कहा ऊपर जीरो हुए फ्री पार्टिकल ऊपर त हमें जानिबा कि एटा ओडे फ्री पार्टिकल राइट ओके देखो सेकंड हैला इफ क्यू आई डबल डॉट यदि ऑसिलेशन कांस्टेंट हुए देन हमें जानि चंती ऑसिलेशन कांस्टेंट हेले हमें तो कोन कोंती यूनिफॉर्मली ऑसिलेटेड मोशन राइट ओके देखो 3 नंबर रे देखो यदि acceleration is equal to negative of generalized coordinate okay then kon haba this is the condition of simple harmonic motion acceleration is directly proportional to negative of displacement qi dot means kon x हे परिबो y हे परिबो थीटा हे परिबो ओके तो हमें जानिबा कि नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट मींस सिंपल हार्मोनिक मोशन फोर्थ पॉइंट रे देखिबा हमें यदि क्यू आई डबल डॉट मींस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस सी क्यू आई ओके माइनस सी क्यू आई प्लस कोटे कांस्टेंट आसे देन आल्सो इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन if qi double dot means acceleration is equal to minus c function of qi
ओके क्यू रो किसी भी फंक्शन होता है क्यू वाई स्क्वायर हो क्यू वाई टू द पावर क्यू हो क्यू वाई टू द पावर फोर्थ हो देन दीटा कंडीशन आसीबो कौन कौन ओके ऑड फंक्शन जदि एटा गोटे ऑड फंक्शन थिबो एफ क्यू वाई टा ताले आमे फंक्शन को कौन कहबा ऑसिलेटरी मोशन नॉट सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटरी मोशन ओके जदि इवन फंक्शन हेतिबो इवन फंक्शन ओके देन नॉन ऑसिलेटरी ओके देन नॉन ऑसिलेटरी बुझियला ओके नेक्स्ट जदि एक्सेलरेशन कौन थिबो ना माइनस सी क्यू वाई गोटे कोऑर्डिनेट को डिपेंड करथबो आ गोटे वेलोसिटी को भी डिपेंड करथबो हम एटा कोठी पढ़थिले एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इज ए फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एंड आल्सो वेलोसिटी तो ए मोशन को कौन को आजिबो डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन डैम्प्ड ऑसिलेशन भी कहि परिबा बट डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन भी कहि परिबा डैम्प्ड ऑसिलेशन ओके नेक्स्ट ओके जदि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस सी क्यू वाई एटा सिंपल हार्मोनिक पई आ गोटे एक्स्ट्रा जदि ऐड करबा ए फंक्शन ऑफ टी जदि टाइम डिपेंडेंट हो एक्सेलरेशन ताले कोन होबा फोर्स्ड ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड कोन होबा डिके होबो फोर्स्ड ऑसिलेशन ओके फंक्शन ऑफ टाइम जदि रहला ताले हमें पार्टिकल इक्वेशन ऑफ मोशन को देखिकी हमें कहि परिबा पार्टिकल एग्जीक्यूट्स फोर्स्ड ऑसिलेशन पार्टिकल एग्जीक्यूट्स डैम्प्ड ऑसिलेशन पार्टिकल एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्टिकल इज ए फ्री पार्टिकल ओके हर इक्वेशन ऑफ मोशन को देखिकी हमें कंक्लूजन करि परिबा ओके फाइन राइट डाउन क्वेश्चन Lagrangian of a particle is L is equal to half m x dot square plus k x into x dot पार्टिकल लाग्रांजियन को देखिकी तमे पार्टिकल इक्वेशन ऑफ मोशन कहि परिबो नाही जे पंत तमे फिजिकली कैलकुलेशन न करिछ ओके आ जदि इक्वेशन ऑफ मोशन लेखुन तमे ताहले तमे पार्टिकल डायनामिक्स भी कहि परिबो नाही ओके केते जण पिला लाग्रांजियन को देखिकी तार कहि परिबो पार्टिकल डायनामिक्स केमति हबो के कहि परिबो ना ओके देखो हमें कैलकुलेशन करबा इक्वेशन ऑफ मोशन ओके फर्स्ट हमें फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन ओके जदि इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करबा देन हमें जानि जंदी लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन कोन ना टोटल डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x अच्छी तो x डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल x इज इक्वल टू 0 ओके तो डेल एल अपॉन डेल x डॉट कौन आसीबो d बाई dt डेल एल अपॉन डेल x डॉट देखो ये अच्छी m x डॉट सेकंड टर्म रे आसीबो प्लस k x ओके माइनस ओके डेल एल अपॉन डेल x कौन आसीबो ना k x डॉट माइनस k x dot is equal to 0 ओके तो आपको डेरिवेटिव करले कोन प्राइस हो m x डबल डॉट प्लस k x डॉट माइनस k x डॉट is equal to 0 तो k x डॉट माइनस k x डॉट कैंसिल आउट हो गला तो m x डबल डॉट is equal to 0 mass of the particle is not is equal to 0 that implies x double dot is equal to 0 means acceleration is equal to 0 that implies it is a free particle its motion is not restricted its motion is free okay very good देखो आ गोटे क्वेश्चन देखिबा हमें राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 2 लाग्रांजियन देची e टू द पावर गामा t हाफ m x dot square minus half k x square क्वेश्चन पचारची व्हाट इज द
what is the type of motion? Type of motion of this particle of this system. Okay, तो फास्ट आम एमती जानीपारानी तो आम कौन कैलकुलेसन करवा आम लाग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेसन करने पूर्वर आमको कौन कौन दरकार ना आमको डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट कैलकुलेसन करवा दरकार कौन हम डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट ई टू द पावर गामा टी एम एक्स डॉट ओके ई टू द गामा टी एम एक्स डॉट ठीक अच्छे सिमिलरली डेल एल अपॉन डेल एक्स केते हम ना ई टू द पावर गामा टी कौन हम ना ये माइनस अच्छी तो माइनस के एक्स ओके तो दुटा जिनस पाईगले ए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 ठीक अच्छे ओके तो डी अपॉन डी टी डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट रो वैल्यू पुट करबा e टू द पावर गामा टी एम एक्स डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स e टू द पावर गामा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू 0 मैं डेरिवेटिव करबा e टू द पावर गामा टी को डेरिवेटिव कले e टू द पावर गामा टी इनटू गामा एम एक्स डॉट प्लस e टू द पावर गामा टी रहिला एम एक्स डॉट को डेरिवेटिव कले एम एक्स डबल डॉट ओके माइनस माइनस प्लस e टू द पावर गामा टी के एक्स इज इक्वल टू 0 e टू द पावर गामा टी कॉमन गले कौन पड़े आसला एम भी कॉमन नहीं जीवा एम कॉमन नेले एक्स डबल डॉट प्लस गामा एक्स डॉट प्लस के अपॉन एम एक्स इज इक्वल टू 0 ओके तो एम मास आउ ई टू द पावर गामा टी के भेले 0 ही पारिबनी तो एटा ऑब्वियसली इज इक्वल टू 0 हो ओके तो एक्स डबल डॉट इज सॉरी प्लस गामा एक्स डॉट प्लस के अपॉन एम एक्स इज इक्वल टू 0 एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एक्स माइनस गामा एक्स डॉट तो गोटे कोऑर्डिनेट आ गोटे वेलोसिटी तो हम कौन कही देख आसलेसन जदि एभलिया डिपेंडेंस हम ताले कौन होइछबा इक्वेशन ऑफ मोशन कौन होइतिबो so it is damped oscillation बुझिला केमती आम इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलेशन कला परे आम केमती पार्टिकुलर ट्राजेक्टोरी बा पार्टिकुलर डायनामिक्स कहि परिबा ओके ओके राइट डाउन Lagrangian and Hamiltonian in different coordinate okay different coordinate system रे हमें Lagrangian और Hamiltonian को देखिबा ओके देखो फास्ट आम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखिबा कार्टेशियन लाग्रांजियन समस्त जानिछो हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर ओके माइनस भी एक्स वाई जेड फंक्शन आउट टी बिकॉज पोटेंशियल इज ए फंक्शन ऑफ टी भी हो ओके तो हैमिल्टोनियन आम केमती लिखा ना 1/2m पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर प्लस भी एक्स वाई जेड एंड टी
प्लेन पोलार रे केमति लिखिबा प्लेन पोलार Lagrangian is equal to half m r dot square plus r square theta dot square minus v r theta t. Okay, Hamiltonian कौन लिखिबा now 1 upon 2m p r square plus p theta square upon r square plus v r theta t. ठीक अच्छे. Similarly a spherical polar coordinate रे spherical polar रे हमें केमती लिखंती Lagrangian को ना L is equal to half m r dot square plus r square theta dot square plus r square sin square theta phi dot square minus v r theta phi out t. Similarly, Hamiltonian is equal to 1 upon 2m p r square plus p theta square upon r square plus p phi square upon r square sin square theta minus में plus v r theta phi and t. Okay. Next आसिला कौन cylindrical coordinate. Cylindrical coordinate system. देखो cylindrical coordinate रे कौन हबो ना Lagrangian हमें जानचंती half m rho dot square plus rho square phi dot square plus z square. Okay, minus potential is a function of rho phi and z and t also. Hamiltonian 1 upon 2m p rho square plus p phi square upon rho square plus p z square plus potential is a function of rho phi z and t. Right? ठीक अच्छे. तो आम आज देखले कौन Lagrangian और Hamiltonian इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके, एबे देखिबा Hamiltonian इक्वेशन ऑफ मोशन हमें केमती लिखिबा. जेमती Lagrangian इक्वेशन ऑफ मोशन लिखुतिले सेमती हमें Hamiltonian इक्वेशन ऑफ मोशन हमें केमती लिखिबा. राइट डाउन Hamiltonian इक्वेशन ऑफ मोशन. देखो यदि Hamiltonian इज ए डायनामिक वेरिएबल हुए इज ए फंक्शन ऑफ qi pi and t if h be Hamiltonian. Okay, Hamiltonian of system then equation of motion are written as कौन लिख परिया में देखो q I dot is equal to partial derivative of pi ये ला फर्स्ट इक्वेशन. देन सेकंड इक्वेशन है pi dot is equal to del h upon del qi माइनस आपको मन केमती रखिबो. देखो जदि आमे फर्स्ट रे डेरिवेटिव रहबो. ओके, जदि qi रे डेरिवेटिव करबा ताले एठी pi रहइबो. यदि pi रे डेरिवेटिव करबा ताले एठी डिनोमिनेटर रे qi रहइबो. बट जेतले qi डिनोमिनेटर रहइबो सेतले माइनस साइन हो. ओके, एटा हमें मन रखिया पे पड़िबो. आर किछ हो अल्टरनेटिव नाही. ओके, अल्टरनेटिव वे नाही आको मन रखिया पे पड़िबो. कोनोसी उपाय रे भी कोनोसी ट्रिक रे हमें इक्वेशन ऑफ मोशन को Hamiltonian इक्वेशन ऑफ मोशन को मन रखिबा. ओके, देखो हमें क्वेश्चन करबा कि Hamiltonian देछि हमें केमती तार इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलेशन. देखो h देछि p theta square upon 2ml square plus mgl
1 माइनस cos थीटा। तो आम इक्वेशन मोशन फॉर्मूला कैलकुलेशन करवा सॉरी यूज करके आम इक्वेशन मोशन कैलकुलेशन करवा। ओके तो क्वेश्चन देछि फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ थीटा। ओके देखो तो इक्वेशन ऑफ मोशन आम लिखा फास्ट क्यू आई इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल पी क्यू आई डॉट पी आई and pi dot is equal to minus del h upon del qi। ओके तो फास्ट हमें qi dot means थीटा डी थीटा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बा वेरिएबल। ओके तो थीटा डॉट इज इक्वल टू डेल h अपॉन डेल p थीटा, डेल h अपॉन डेल p थीटा इज इक्वल टू आकु विथ रेस्पेक्ट टू p थीटा रे डेरिवेटिव कले कोन आसीबो ना 1 अपॉन एम एल स्क्वायर ऊपर आसीबो p थीटा अपॉन एम एल स्क्वायर। ओके दैट implies p थीटा इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। ठीक अच्छे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन पी आई डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल एच अपॉन डेल क्यू आई। तो पी आई डॉट मीन्स पी थीटा डॉट इज इक्वल टू नेगेटिव साइन डेल एच विथ रेस्पेक्ट टू डेल एच अपॉन डेल थीटा माइनस ऑफ हमें हैमिल्टोनियन को विथ रेस्पेक्ट टू थीटा रे डेरिवेटिव कले कोन आसीबो mgl एपटे माइनस cos थीटा रही जिवो माइनस sin थीटा। ओके माइनस mgl माइनस 1 आउ cos थीटा रहला माइनस sin थीटा। ठीक अछि तो आंसर आस जिवो माइनस mgl sin थीटा कार वैल्यू p थीटा डॉट वैल्यू। ओके तो आमे कोन पाइथिले p थीटा पाइथिले, p थीटा कोन पाइथिले देखो p थीटा इज इक्वल टू m l स्क्वायर थीटा डॉट पाइथिले। तो देखो ए दुटा इक्वेशन को देखो ए दुटा इक्वेशन ले आमे केमती थीटा डॉट p को एलिमिनेट करबा केमती p थीटा को एलिमिनेट करबा हमको थीटा रे इक्वेशन दरकार। तो आमे कोन करबा दुटा इक्वेशन दुटा वेरिएबल देखो p थीटा थीटा आउ p थीटा थीटा दुटा इक्वेशन दुटा वेरिएबल। तो आमे थीटा इक्वेशन केमती लिखिबा से मागी जे थीटा इक्वेशन। ओके तो आमे p थीटा को कोन करबा एलिमिनेट करबा। एलिमिनेट करबा पई देखो एटी p थीटा डॉट अछि तो सेकंड इक्वेशन ले p थीटा डॉट आनिया पे पड़िबो। तो आमे गोटे थर डेरिवेटिव कर दबा डेरिवेटिव कले ml स्क्वायर कोन आसीबो थीटा डबल डॉट पळे आसीबो। तो एटार वैल्यू आमे एटी पुट कर दबा कोड नै पुट करबा एटी पुट कर दबा ml स्क्वायर थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस mgl sin थीटा। ओके तो m कैंसिल आउट हो गला गोटे एल कैंसिल आउट हो गला। तो मैं लिख पारि थीटा डॉट इज इक्वल टू माइनस g अपॉन l sin थीटा। ओके तो थीटा डबल डॉट प्लस g अपॉन l sin थीटा इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर थीटा। ओके ओके तो आउ थे कही रखुची देख आज ये स्टॉप कर नेक्स्ट क्लास रे फिर फर्दर डिस्कस करबा हमर पॉइजन्स ब्रैकेट। ओके पॉइजन्स इक्वेशन पॉइजन्स ब्रैकेट। ओके आउ किछि प्रॉब्लम भी करबा। ओके नेक्स्ट क्लास रे जो माने भी इंटरेस्टेड अच्छा पेड बैच पाई बिकॉज ये वीडियो को मु पब्लिक करिया पे जाउची जो माने इंटरेस्टेड अच्छा पेड बैच जॉइन करिया पे देरी न करी कि एसएसबी पीजीटी रो ऑलरेडी डेट आसी साइलानी। तो एसएसबी लेक्चरशिप रो जो पिला माने कहूच कि आसीबनी ऑलरेडी माने आमे जानिबार जो आमे जो सूत्र जानिया पे पाइछु कि ऑलरेडी वैकेंसी लिस्ट क्रिएट सरिलानी तम मानकर एडवर्टाइजमेंट आसिया पई बाकी अछि। ओके जोटा कि आसीबो जेतु एबे पीजीटी रो प्रोसेसिंग चलछि तो तमरो एसएसबी लेक्चरशिप रो भी एडवर्टाइजमेंट आसीबो सेति पई देरी न करी कि निज निजर
पढ़ा स्टार्ट कर दियो बिकॉज बहुत सारा सिलेबस अच्छी आम कवर करने बहुत सारा एग्जाम देवाई अच्छी बहुत सारा असाइनमेंट भी सॉल्व कर अच्छे सो टाइम वेस्ट न करके आम आमर जो अनुसार क्लास होची सिक्वेंशियली मैथमेटिकल फिजिक्स क्लासिकल मेकानिक्स ओके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्वांटम मेकानिक्स स्टैटिस्टिकल मेकानिक्स ओके इलेक्ट्रॉनिक्स सॉलिड स्टेट फिजिक्स न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स बहुत सारा अच्छी बहुत सारा सिलेबस अच्छी आम डिटेल्स रे जेहेतु पढ़ुं टाइम लगे आमको सो आम सांगे जीवाई हेले तुमको जॉइन करने पड़ो बैच तो जदि भी इंटरेस्टिंग लगुचे जॉइन कर ओके थैंक यू एवरीवन।